Hello, myself Pransu. Welcome back, my dear friends. So, as per my consideration, today we will discuss on DNA topology. So, dear friend, to understand DNA topology, we have to go through some basic things. Okay, so let's start with a video animation which will make you clear about DNA topology. Okay, so let comes. Okay, so try to see each and every point with pin drop silence and try to note something whenever it possible to you. Okay, DNA. DNA topology describes the coiling of a molecule of DNA. When you have completed this exercise, you should understand why the linking number for a molecule of covalently closed circular DNA, or cccDNA, is constant. Understand the twist component of the linking number. Understand the writhe component of the linking number. And understand how cells utilize supercoiling. इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं ये वीडियो आपको फुलफिल करने की कोशिश करेगा, तो वी हैव टू जस्ट वॉच इट. ओके, Note, many of the DNA structures shown in this exercise are meant to serve as models to aid in the understanding of twist and writhe. They do not represent actual structures found in living cells. Each of the chromosomes of eukaryotes is comprised of a single linear DNA molecule. Because their ends are free, linear DNA molecules can freely rotate to change the number of times the two chains of the double helix coil about one another. However, DNA molecules can also be circular. Examples of circular DNA molecules. आपको पता है कि सर्कुलर डीएनए कहाँ होता है? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मैक्सिमम आपको देखे जाएंगे. इवन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेन व्हाट? सर्कुलर डीएनए, है ना, बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक ऑरिजिन, है ना. तो आपको याद रखना है कि जो लीनियर डीएनए होता है उसका नीचे जो है वो क्या होता है? खुला होता है. इसीलिए वो क्या होता है, जब खुलेगा, टोपोलॉजी का मतलब क्या है? इनके स्ट्रक्चर के कैसे दिखते हैं. तो डीएनए जब लीनियर होगा तो उसको खुलना आसान होगा इन कंपैरिजन टू द सर्कुलर. ठीक है. Molecules include most bacterial chromosomes, some viral chromosomes, and small bacterial genetic elements called plasmids. For such covalently closed circular DNA, the absolute number of times the chains coil about one another cannot change. These DNA molecules are said to be topologically constrained. Even the linear DNA molecules of eukaryotic chromosomes can be topologically constrained because of their interactions with other cellular components. Since each of the two strands of cccDNA are covalently linked circular chains, and because they coil around one another, the strands cannot be separated from each other without breaking a covalent bond and opening the circle of one of the strands. The two strands could be separated if they were able to magically pass through each other. The number of times one strand would have to be passed through the other strand in order for the two strands to be entirely separated from each other is called the linking number. The linking number is always an integer. The linking number is an invariant topological. यहाँ पे आपको बिल्कुल याद रखना है कि लिंकिंग नंबर हमेशा क्या होगा? इंटीगर होगा. ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं हो सकता. ठीक है. जबकि रीड और ट्विस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है, लेकिन लिंकिंग नंबर कभी भी क्या हो सकता है? जब भी होगा तो इंटीगर फॉर्म में होगा. Property of cccDNA. No matter how much a cccDNA molecule is distorted, the linking number remains constant. The linking number is the sum of two geometric components called twist and writhe. Twist is simply the number of helical turns of one strand about the other. In other words, the twist number is equal to the number of times one strand crosses in front of the other strand. If cccDNA is lying flat in a plane, the linking number is equal to the twisting number. If the twists form a right-handed helix,
As in DNA under normal conditions, they are given a positive twist number. To determine if a helix is right-handed, think of it as a screw. इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही important है आपके लिए. You would have to twist a right-handed screw to the right, clockwise, to screw it into a board. Also, in a right-handed helix, the strand in front at a cross point is pointed up to the right. If the twists form a left-handed helix, as can occur under special circumstances, they are given a negative twist number. You would have to twist a left-handed screw to the left, counterclockwise, to screw it into a board. Also, in a left-handed helix, the strand in front at a cross point is pointed up to the left. इसका मतलब ये हुआ कि अगर राइट हैंडेड हेलिक्स होगा तो आपको हमेशा जो ट्विस्ट की संख्या मिलेगी वो क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है. और जैसे ही लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होगा तो उसमें क्या मिलेगा आपको, ट्विस्ट जो मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज मैनर में जा रहा है और एक क्लॉकवाइज मैनर में जा रहा है. जो राइट हैंडेड हेलिक्स है उसमें क्लॉकवाइज मैनर में जा रहा है, इसलिए क्या मिल रहा है आपको, ट्विस्ट पॉजिटिव मिल रहा है और उसमें क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव मिल रहा है. ठीक है, समझ में आई बात. चलिए. However, CCC DNA does not generally lie in a flat plane. Instead, the DNA double helix usually crosses over itself in three-dimensional space, often repeatedly. This torsional distortion is called writhe. राइट, समझ में आया कि जो एक ही क्लोज सर्कुलर डीएनए जो है, कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, जब एक से वन अनदर पे पास नहीं करा, एक ही जो क्लोज सर्कुलर डीएनए है वो आपस में टॉर्शनल स्ट्रेस के कारण क्या हो रहा है कि वो मूवमेंट कर रहा है. तो इस मूवमेंट के कारण क्या होगा, रीथ फॉर्मेशन होगी. ठीक है. Writhe can take two forms. One form is interwound or plectonemic writhe. In interwound writhe, the DNA is wound around itself, forming a helix. Most CCC DNA molecules exhibit interwound writhe. The writhing number is the total number of writhes in a molecule of DNA. If right-handed DNA forms a right-handed interwound helix, the DNA must twist to accommodate the writhe. Therefore, right-handed interwound turns are assigned negative writhing numbers. Note that अगर राइट हैंडेड होगा तो राइट हैंडेड अगर मूवमेंट हो रही है, ठीक है, तो कैसा होगा, रीड हमेशा नेगेटिव होगा, लिंकिंग नंबर हमेशा फिक्स होगा. जब तक कि आप डीएनए को कट न करेंगे तब तक क्या होगा, लिंकिंग नंबर फिक्स होगा. ठीक है, रीड और ट्विस्ट में चेंजेज होंगे, बट हाँ ओवरऑल जो लिंकिंग नंबर होगा वो कांस्टेंट होगा. although the linking number must be an integer, the twist and writhing numbers can have fractional values. If right-handed DNA writhes to form a left-handed interwound helix, the twist number of the देख रहे हैं यहाँ पे रीड क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है. ठीक है, क्यों, क्योंकि जब इंटरबाउंड हो रहा है तो आपका रीड क्या है, क्या हो रहा है, जीरो से कम रहा है, यानी नेगेटिव में जा रहा है. ठीक है, इंटरबाउंड में. और जब यह DNA decreases. ओवरबाउंड होगा, Therefore, left-handed interwound turns are assigned positive writhing numbers. The other form of writhe is spiral or स्पाइरल कब होता है, जब जैसे मैंने आपको अभी क्या बताया था, हिस्टोन मॉडिफिकेशन. सो इन हिस्टोन मॉडिफिकेशन एक्चुअली इट इज बाइंडिंग ऑन ए प्रोटीन. सो प्रोटीन एंड डीएनए इंटरेक्शन पर ही क्या होगा, स्पाइरल रीड की फॉर्मेशन. toroidal writhe. In spiral writhe, the DNA winds as if around a cylinder. Spiral writhe often occurs when DNA molecules wrap around proteins. If right-handed DNA writhes to form a right-handed spiral coil, the twist number decreases. Therefore, right-handed spiral turns are assigned positive writhing numbers. Note that this is the opposite of right-handed interwound turns. If right-handed DNA writhes to form a left-handed spiral coil, the DNA must twist to accommodate the writhe. Therefore, left-handed spiral turns are assigned negative writhing numbers. Again, this is the opposite of left-handed interwound turns. Under normal physiological conditions, the average structure of DNA has about 10.5 base pairs per turn of the helix. Therefore, the linking number of fully relaxed DNA can be calculated by dividing the total number of base pairs by 10.5 to find the number of twists.
This linking number is assigned the symbol LK0. If writhes are introduced to the DNA, LK0 कहने का मतलब क्या हुआ कि इनिशियल, जब आपका डीएनए क्या है, रिलैक्स फॉर्म में है, और जब लिंकिंग नंबर बताएगा, जब LK बताएगा, इसका मतलब यह है कि उसमें ट्विस्ट और रीड की फॉर्मेशन हो रही है। देख रहे हैं यहाँ पे ट्विस्टिंग। Without changing the number of twists, the linking number changes. The difference between the actual linking number and LK0 is the linking difference. If the linking difference is significantly less than 0, the DNA is negatively supercoiled. If the linking difference is significantly greater than 0, the DNA is positively supercoiled. समझाया? लिंकिंग डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यह बताने के लिए कि डीएनए नेगेटिव सुपरकॉइल है या पॉजिटिव सुपरकॉइल है। CCC DNA from both bacteria and eukaryotes are usually negatively supercoiled. Negative supercoils can be thought of as a store of free energy that aids in strand separation for processes such as DNA replication and transcription. मतलब कहने का मतलब क्या है, रिलैक्स्ड फॉर्म में जो भी डीएनए होते हैं एक्चुअली उनमें ऑलरेडी नेगेटिव सुपरकॉइल होता है। व्हाई इट इज सो? बिकॉज आपका जो प्रोसेस होता है लाइक ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एंड रेगुलेटरी प्रोसेसेस, सो ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होता है, नेगेटिव सुपरकॉइलिंग क्या होता है, जैसे जैसे ये खिंचता है, मैं बताऊंगा आपको जब हम लेक्चर के दरमियान जाएंगे, बस आपको अच्छे से इसको देखने की कोशिश करना है, ठीक है। When right-handed interwound turns in the DNA are relaxed, the twist number decreases and the DNA unwinds. Ask yourself, under what conditions might an organism need positively supercoiled DNA? DNA molecules with the same sequence and length but different linking numbers are called DNA topoisomers, since they differ only in topology. Topoisomerases are enzymes that change the linking number of a DNA molecule. There are two types of topoisomerases. Type 1 topoisomerases increase linking numbers in steps of 1. By introducing an additional twist, type 1 topoisomerase याद यही रखना है कि टाइप 1 मीन्स वन स्ट्रैंड काटेगा, टाइप 2 मीन्स दोनों काटेगा, ठीक है। दोनों काटेगा तो इजीली काम हो जाएगा, लेकिन एक कटेगा तो क्या होगा? relax negative supercoils. Type 2 topoisomerases change linking numbers in steps of 2. ओके, चलिए कोई नहीं। तो अब हम चलते हैं, तो अब हम थोड़ा डीएनए टोपोलॉजी को समझ सकते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमने पिछले वीडियो में देखा उससे हमें ये तो पता चला कि डीएनए टोपोलॉजी किन किन बातों पे निर्भर करती है। सो डियर फ्रेंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्विस्ट ऑफ डीएनए एंड रीड इन द डीएनए, ठीक है। यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट्स? ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द लिंकिंग नंबर। सो लिंकिंग नंबर क्या होगा? ये दोनों का सम होगा, ट्विस्ट और रीड जो होगा दोनों का जो सम होगा वो क्या देगा? लिंकिंग नंबर देगा, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी बात, व्हाट इज लिंकिंग डिफरेंस? बिकॉज लिंकिंग डिफरेंस भी मैंने मेंशन किया था, आपने वीडियो में भी देखा था कि लिंकिंग डिफरेंस कैसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ द फर्स्ट एंड very important point, that is super helical density, which is not covered in this video but we will discuss in this lecture also. So these four factor is very important to understand DNA topology. So dear friend, what do you mean by DNA topology? So as you can see, this is called supercoiling. So first of all you have to understand coil and then you have to understand supercoil. Why we are using supercoil? You dear friend, you already know that DNA is double stranded structure. So ये already क्या है? एक तार जब दूसरे तार से जुड़ा हुआ होता है तो वो ऑलरेडी है, लेकिन अब तार भी क्या हो रही है, एक दो तार, मैं आपको एक और वीडियो दिखाऊंगा जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे सुपर कॉइलिंग और कॉइलिंग में अंतर है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक तो आप जैसे कि आप यहाँ पे हेडफोन देख सकते हैं इसका, ठीक है, ये हेडफोन है, ये जो कॉइल है इसका, ये फोन का, और आप ऐसे देख सकते हैं कि ये ऑलरेडी पहले तो कॉइल है, ठीक है, और इस कॉइलिंग में दोबारा कॉइलिंग हो रही है। सो दिस इज कॉल्ड एज सुपर कॉइलिंग, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो आज यू कैन सी हियर, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये तो ऑलरेडी डीएनए का स्ट्रक्चर है और अब डीएनए का भी क्या कर रहे हैं, अब एक तरफ से पकड़ लो और दूसरे तरफ से खींचो,
ठीक है, एक तरफ से क्या करो, फिक्स कर दो, किसी को पकड़ने के लिए कहो, और दूसरी तरफ से लगातार खींचने की कोशिश करो, तो आपको बीच में इस तरह का स्ट्रेन दिखाई देगा। दिस इज कॉल्ड टोपोलॉजिकल डिफरेंस, बिकॉज ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क बनना होता है। तो शुरुआत में ही डीएनए जो होता है, हमारे जो बी डीएनए होता है, जो भी हमारा फंक्शनल डीएनए है, वो ऑलरेडी क्या रखता है अपने अंदर, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग रखता है। क्यों? क्योंकि आराम से जब आप स्ट्रेन दो तो फ्रेजाइल नहीं हो और क्रोमोजोम में ब्रेकेज नहीं हो, इसलिए हमारा जो डीएनए है वो ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव सुपर कॉइल है। ठीक है, क्यों नेगेटिव सुपर कॉइल है, आपको अंडरस्टैंडिंग आई? बिकॉज ये जो स्ट्रेन पैदा होगा वो क्या कर सके, डीएनए सह सके। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं, ऐसा हम देते हैं। सो इट्स कैन इजिली able to tackle this type of strain which is developed by transcription and translation and regulatory processes. Okay, so dear friend, so you have to understand the meaning of supercoil means coiling of coil. Understand? Okay, so this is double stranded DNA helix, and this double stranded helix is undergoing supercoiling. So there are two types. This is due to the रीद कंस्ट्रक्शंस। ओके, यहाँ पे आपको ऐसा मैंने दिखाया था ना, वीडियो में देखा था हम लोगों ने कि ऐसा जब होता है तो क्या हो रहा है, रीद फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कि कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए क्या हो रहा है, अपने एक्सिस पे ही टॉर्शन एंगल बना रहा है, और टॉर्शन के कारण क्या हो रहा है, स्ट्रेन पैदा हो रहा है और रीद की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो अब हम देखते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या बातें हो सकती हैं। ठीक है, तो लिंकिंग नंबर इज ए topological property of double stranded DNA because it does not vary when DNA is bent or deformed as long as both DNA strands remain intact. Linking number is denoted by LK. मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या है, लिंकिंग नंबर एक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, जिसमें क्या होता है कि आपका डीएनए तब तक नहीं, जब तक लिंकिंग नंबर नहीं बदलेगा, जब तक कि आपका डीएनए इंटैक्ट है, रिमेन इंटैक्ट है, मतलब कटा नहीं है। इफ यू विल जस्ट एज सुन एज यू विल कट योर डीएनए, लिंकिंग नंबर विल चेंज, क्योंकि जैसे ही रीद क्या होता है, ट्विस्ट और रीद दो फैक्टर होते हैं जो लिंकिंग नंबर के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एज यू कैन सी हियर द लिंकिंग नंबर कैन बी ब्रोकन इनटू टू सब स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट इज ट्विस्ट एंड रीद, दिस टू हैव ए फ्रैक्शनल वैल्यू। ये क्या हो सकता है, फ्रैक्शनल वैल्यू में मिल सकता है, लेकिन आपको लिंकिंग नंबर हमेशा कैसे मिलेगा, इंटीगर में मिलेगा। आपने वीडियो में देखा था ना। तो ट्विस्ट और रीद जो है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको याद रखने के लिए। ठीक है, तो जैसे ही आपका डीएनए टूटेगा रीद जीरो हो जाएगा। ठीक है, रीद क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि डीएनए तो टूट गया। डीएनए को आप जब से ही काट दोगे, इसकी जो इंटैक्ट प्रॉपर्टी है, व्हेन एज सून एज यू विल व्हेन इज द रीद नंबर, रीद कंस्ट्रक्शन विल गोज अवे एंड दैट इज बिकम जीरो। ठीक है, तो लिंकिंग नंबर पे क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट आ जाएगा, है ना। अदरवाइज आपका लिंकिंग नंबर जब तक कि डीएनए आपका इंटैक्ट है तब तक लिंकिंग नंबर सेम होगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लिंकिंग नंबर क्या होता है, ट्विस्ट प्लस रीद होता है। ट्विस्ट एंड रीद आर ज्योमेट्रिक रेदर देन टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। आपको समझ में आया क्या है, लिंकिंग नंबर टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, लेकिन जब अलग अलग ट्विस्ट और रीद को देखेंगे तो ये क्या है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है इन कंपेरिजन टू द टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, लिंकिंग नंबर है, लेकिन जब ये दोनों अलग अलग फैक्टर होंगे तो ये ज्योमेट्री ही तो है, डीएनए की ज्योमेट्री, कैसे चेंज हो रहा है डीएनए, कैसे अपना शेप चेंज कर रहा है। ठीक है, सो डियर फ्रेंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉजिटिव सुपरकॉइल एंड व्हाट इज नेगेटिव सुपरकॉइल। Suppose your DNA is relaxed. As you can see here, this is relaxed DNA with linking number of 200. Suppose आपका जो यहाँ पे लिंकिंग डिफरेंस है -2 है। -2 होने का मतलब क्या है, लिंकिंग डिफरेंस है ना। लिंकिंग डिफरेंस आने का मतलब, लिंकिंग डिफरेंस -2 का मतलब आपका डीएनए क्या है, नेगेटिव सुपरकॉइल है। तो यहाँ पे जो LK हो जाएगा आप घटा दोगे तो 198 हो जाएगा। और वहाँ पे क्या है, लिंकिंग डिफरेंस +2 आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे पॉजिटिव सुपरकॉइल है, और पॉजिटिव सुपरकॉइल का मतलब क्या हो गया, अब आपका लिंकिंग नंबर 202 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव सुपरकॉइलिंग और पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग आपको लगता है मेरे समझ से आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आया, बेसिक फंडा। चलिए, तो अब हम एक और वीडियो देखते हैं ताकि हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाए, है ना। पूरे डाउट क्लियर करने के लिए हमें इसको अच्छे से देखना पड़ेगा, तो आप स्टे ट्यून कीजिए
और कोशिश कीजिए कि एक एक पॉइंट को हमें क्लियर करते चलना है, ठीक है? सो लेट्स वी हैव टू वॉच द सेकंड एनिमेशन. It is a well-known fact that double-stranded DNA forms a double helix structure, but the double helix itself can twist and turn into different conformations. So, how does DNA change its shape, and why is this behavior important to our cellular functions? This video will use a physical model of DNA to help explain the significance of DNA topology and simulate how specific enzymes modify the conformation of double-stranded DNA. The unstrained or relaxed DNA structure has 10.4 base pairs per turn of the helix. One way to describe the structure of a DNA double helix is by a combination of its twist and writhe, the sum of which is called the linking number. The twist is described as the number of helical turns of one strand about the other, and can be measured by counting how many times one strand wraps completely around the other. For example, this relaxed linear DNA has a twist of 1, 2 times modify the conformation of double-stranded DNA. The unstrained or relaxed DNA structure has 10.4 base pairs per turn of the helix. One way to describe the structure of a DNA double helix is by a combination of its twist and writhe, the sum of which is called the linking number. The twist is described as the number of helical turns of one strand about the other, and can be measured by counting how many times one strand wraps completely around the other. For example, this relaxed linear ये आपका DNA है. अब ये फिर से जब करेगा तो ये सुपर कॉइलिंग है. ये कॉइल है. अब सुपर कॉइलिंग की बात. DNA has a twist of 1, 2, 3. There is 0 writhe in this example. The writhe is described as how many times the double helix crosses over itself, and is positive or negative depending on the orientation. For example, the circular DNA has a writhe of -1 because it follows the right-hand rule and the upper strand travels left to right, and this DNA has a writhe of 1. Both of these examples also have twist. Realistically, long DNA molecules like these can have linking numbers in the thousands. Turns of one strand about the other strand wraps completely around the other. For example, this relaxed 0 helix crosses ocean. For example, the माइनस रीड कब है? जब देख रहे हैं ऊपर से आ रहा है. और circular DNA has a writhe of -1 because it follows the right-hand rule and the upper strand travels left to right, and this DNA has a writhe of 1. Both of these examples also have twist. Realistically, long DNA molecules like these can have linking numbers in the thousands. For this video, we're going to look at a physical model of circular DNA with covalently linked ends. Unlike linear DNA, this shape is topologically constrained, meaning you can't change the linking number of the DNA without breaking one or both of the strands. हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कोवेलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए, निक्ड डीएनए जब जेल चलाओगे तो जेल पैटर्न में आपको कैसे दिखेगा? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें बताइए. What would physically happen to this DNA if you added or removed twists or writhe in the double helix? Overwound DNA has fewer than 10.4 base pairs per turn of the helix. Thus, overwound DNA is more tightly wound than relaxed DNA, and has a greater number of twists and a higher linking number than relaxed DNA. When DNA is overwound and has an increased linking number, the DNA becomes positively supercoiled, and the double-stranded structure begins wrapping around itself and creating positive writhe. Regardless of these visible changes in conformation, remember that positively supercoiled DNA will have a higher linking number than relaxed DNA, and the two strands of the double-stranded DNA are more difficult to separate. Underwound DNA has greater than 10.4 base pairs per turn of the helix. Thus, underwound DNA is less tightly wound than relaxed DNA, and has a fewer number of twists and a lowered linking number than relaxed DNA. When DNA is underwound and has a decreased linking number, the DNA becomes negatively supercoiled, and the double-stranded structure begins wrapping around itself in the opposite direction as positive supercoiling, creating negative writhe. Regardless of these visible changes in conformation, remember that negatively supercoiled DNA will have a lower linking number than relaxed. देख रहे हैं कितना इजीली नेगेटिव सुपरकॉइल में क्या हो रहा है? इसीलिए हमारा डीएनए क्या होता है? नेगेटिव सुपरकॉइल. आप देखिए कितना इजीली वे में ये वहाँ से हट जा रहा है, और वहाँ पे जब पॉजिटिव सुपरकॉइल था तो ये ट्विस्ट ज़्यादा था. तो एसेसिबिलिटी आरएनए पॉलीमरेज की वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव सुपरकॉइल में कम हो जाएगी, और नेगेटिव सुपरकॉइलिंग इसीलिए हमारे डीएनए में बहुत ज़्यादा जरूरी है. Relaxed DNA and the two strands of the double-stranded DNA can be separated more easily. But if DNA is least strained in the relaxed form, how does the double helix change from being relaxed to overwound or underwound? And how does positively or negatively supercoiled DNA return to a relaxed state? Topoisomerases are a class of enzyme that usually restores DNA to its relaxed state.
This means that topoisomerases unwind overwound DNA strands, reducing the linking number back to the preferred 10.4 base pairs per turn, or rewind underwound DNA strands, increasing the linking number back to 10.4 base pairs per turn. Topoisomerases work by breaking 1 or 2 DNA strands and passing the same number of DNA strands through the break. This change results in an increase or decrease in the linking number of our topologically constrained circular DNA. There are two main categories of topoisomerase, type 1 and type 2. Type 1 topoisomerase breaks one of the 2 DNA strands and passes the other strand through the gap. This increases or decreases the linking number by 1. Here, the top DNA double helix represents the structure before the topoisomerase added a twist, and the bottom DNA double helix is after the enzyme completes the reaction. Type 1 topoisomerase reactions do not require additional energy. Type 2 topoisomerase breaks both of the 2 DNA strands and passes the entire double helix through the gap. This increases or decreases the linking number by 2. Here, the top DNA double helix represents the structure before the topoisomerase acts, and the bottom DNA double helix is after the enzyme completes the reaction. In this case, the result is that the writhe of the molecule increases by 2. To make this idea clearer, this diagram shows what this change would look like if you added one positive writhe at a time instead of using type 2 topoisomerase. Type 2 topoisomerase reactions require some form of energy, such as ATP or NADH. Bacteria also have a special form of type 2 topoisomerases called gyrase. Gyrase enzymes use energy to negatively supercoil DNA rather than restoring DNA to the relaxed state. Certain thermophiles also have topoisomerases that use energy to positively supercoil DNA rather than restoring DNA to the relaxed state. Because it acts oppositely to gyrase, these enzymes are called reverse gyrase. But if DNA is unstrained in its relaxed state, why would organisms have enzymes that intentionally supercoil their DNA, either positively or negatively? Thermophiles and hyperthermophiles thrive at relatively high temperatures, ranging from 45 to over 100 degrees Celsius. Positive supercoiling in thermophile DNA adds additional twists or writhe to the double helix, thus increasing the linking number. These changes stabilize the structure, preventing the DNA from denaturing as easily at high temperature. Wanting stable DNA structures makes evolutionary sense, but what about the organisms with negatively supercoiled DNA? In fact, the DNA of most organisms is negatively supercoiled. Negatively supercoiled DNA provides a store of free energy that helps with cellular processes that require strand separation of the double helix, like DNA replication and transcription. Underwound DNA has a tendency to partially separate, so strand separation is easier than in a relaxed DNA structure, with more twists holding the double helix together. In short, negatively supercoiled or underwound DNA makes it easier to separate the double helix into 2 single strands. As you separate the double helix in negatively supercoiled DNA, you are creating more twists in the rest of the DNA, causing rewinding of the underwound strands. Rather than putting strain on the DNA topology, the DNA that is still base pair. समझ में आया कि नेगेटिव सुपरकॉइलिंग कितना इजीली आपका रिलैक्स फॉर्म से तो ऑब्वियसली नेगेटिव सुपरकॉइल में कुछ ना कुछ तो स्ट्रेन होगा, ठीक है, लेकिन जितना रिलैक्स होगा उतना ही ज़्यादा नेगेटिव सुपरकॉइलिंग उसमें देखने को आपको मिलेगा. Is returned to the ideal relaxed state. Plus, you have a portion of separated single DNA strands. देखिए कितना इजीली आप किसी भी फ्रैगमेंट को आप एसेस कर सकते हो, लेकिन जब पॉजिटिव सुपरकॉइलिंग होगी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन होगा, और जितना ज़्यादा स्ट्रेन होगा उतना ही प्रॉब्लम होगा आपको उस डीएनए फ्रैगमेंट को. That can be used in cellular processes like replication and transcription. If you tried to separate the double helix of relaxed DNA, you would introduce more twists in the DNA and end up overwinding or positively supercoiling the double helix, which is energetically unfavorable. This video modeled how DNA topology extends beyond the double helix structure and how topology is critical to our cell's ability. कैसे हमें DNA supercoiling is important for you guys, okay? So यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ठीक है, तो आपको मैं फिर से दोहरा दूं कि सबसे पहले आपको इन सब 4 बातों पे क्या करना है, इस वीडियो में हमें फोकस करना है, ठीक है. तो यहाँ पे हम अपना क्या करते हैं, पार्ट 1 खत्म करते हैं, ठीक है, और हम फिर इसके पार्ट 2 में देखेंगे न्यूमेरिकल बेसिस. ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट. आई विल